Yes, good morning, my dear students. Let's start. Unit number 5. The name of the unit is Green Skills. Yes, my dear students, green skills means how we can keep our environment green. And in this unit, we will just learn these things. First one is know what is environment. First point that we will learn from this unit, that is what do you mean by environment. And next thing is here, learn the relationship between society and environment and ecosystem and factors causing imbalance. Means what is the relationship between society and environment and ecosystem, and what are the factors that make environment imbalance. Next is here, know about natural resources conservations, means how we can conserve our natural resources. Know the environmental protection and conservation. Tell the definition of green economy and learn the importance of green economy. These points we will discuss in this unit. In first session, they are just telling about the what do you mean by environment. Environment, all of you know that environment means what? Whatever in our surrounding and external conditions are there that affect the animals, peoples and plants, that is called environment. If we read from here, the word environment has been derived from the French word environner, meaning to encircle. Means हमारी surroundings में बेटा जो भी चीज है that is called environment. And they are also saying that dictionary meaning of the word environment is what? It is a surrounding, or you can say external condition influencing development or growth of the people, animals or plants, living or working conditions, that is called environment. Also, in this paragraph, they are saying the same thing. Environment refers to the sum of total conditions which surround man at a given point of space and time. That is called environment. And now they are saying that structure and types of environment. Basically, environment is divided into two parts, that is non-living and living. And abiotic and biotic, abiotic called non-living things and living things are called biotic. And they are also saying that on the basic of physical characteristics and state, a biotic and physical environment is subdivided into three broad categories, that is solid, liquid and gas. So environment is further divided into main two categories, that is abiotic and biotic. Abiotic are called non-living things like grass is there, land is there, that is the part of non-living thing. And biotic is there, human being, animals, birds are there, that is the part of your biotic. Now after that there is the self-assessment, and at the end of the class I'll give you the sole self-assessment for this. Let us discuss here which of the following is the meaning of the word environment. Environment is what? Living or working condition, external condition influencing development of people, animal and plants. We know that both of two are the part of environment, so answer will be what? It will be all of these. Next is here, what are the two types of environment? We know that biotic and abiotic, both are the part of environment. So answer will be here, both of these. Now come to the second session, that is what is the relationship between society, environment, ecosystem and factors causing imbalance. Now in this, first point is here, relationship between the society and environment. Yes beta, they are saying that this relationship further divided into three categories. First is here physical man, second one is here social man, and the third one is here economic man. Physical man means beta kya hota hai? Physical man is a component of the biological community such as requires basic element, physical elements such as he needs only air, water, food and habitat etc. like other biological population. फिजिकल मैन कौन से होते हैं बेटा? जिन्हें सिर्फ अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, वो एनवायरनमेंट से मीन्स हवा ले ली, वाटर ले लिया या फूड ले लिया या एज अ हैबिटेट मीन्स रहने का जगह ले ली, दे आर कॉल्ड फिजिकल मैन. एंड नेक्स्ट वन इज हियर सोशल मैन. सोशल मैन कौन से होते हैं बेटा? सोशल मैन एस्टैब्लिशेस द सोशल इंस्टीट्यूशंस
form of the social organization and formulates law and policy to safeguard his existent interest of welfare. सोशल मैन कौन से होते हैं बेटा? जो इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, स्कूल्स बनाते हैं, कॉलेजेस बनाते हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल मैन, जो कुछ भी डेवलप करते हैं सोसाइटी के लिए, बट वो एनवायरनमेंट को तो यूज करते हैं ना। थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरीज हेयर इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन कौन से होते हैं बेटा? ड्राइव्स एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज फ्रॉम द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट विद द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक मैन होते हैं बेटा जो एनवायरनमेंट का यूज करके मनी अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैन। जैसे बेटा ट्री को कट करके कोई भी सोफा का बिजनेस स्टार्ट करता है या फिर बेड का बिजनेस शुरू करता है जिसमें भी वुड यूज होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैन, जो एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज को यूज करके अपनी मनी अर्न करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मैन। Next point is here, the changing relationship of man with the environment from prehistoric and the modern times can be divided into the following four periods. बेटे जो भी रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट में और मैन में, वो इन्होंने फोर कैटेगरीज में बताया है। फर्स्ट पॉइंट इज हेयर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पहले के जो पर्सन होते थे क्या करते थे बेटा? हंटिंग करते थे और अपना बस फूड लेते थे, ट्री से फ्रूट्स वगैरह ले लिए या वेजिटेबल्स ले ली, सिर्फ वो ये लेते थे। नेक्स्ट में क्या हुआ? एनिमल्स डोमेस्टिकेशन एंड पेट्रोलिज्म। एंड द थर्ड में क्या आया? प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर आने लगे। फिर फोर्थ कैटेगरी कौन सी बनाई इन्होंने? साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट में इन्होंने बताया बेटा हंटिंग करके क्या होता था, जो पहले के मैन होते क्या करते, वो हंटिंग करते थे और उससे अपना जो भी उन्हें अपना खाने का इकट्ठा करना होता वो उससे कर लेते थे, या फिर अपना जो भी ट्रीज पे फ्रूट वगैरह होते हैं उन फ्रूट्स को वो रोस्ट करके अपना खाना बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ बेटा? पीरियड ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड द पेस्टोरलिज्म। इसमें क्या हुआ बेटा? विच इज द मार्च ऑफ सिविलाइजेशंस, मैन लर्न डोमेस्टिकेट एनिमल्स फॉर ओन बेनिफिट, कि कैसे हम काऊ को पाल के उसका मिल्क निकाल सकते हैं, कैसे हम बुफेलो को पाल के उसका मिल्क निकाल सकते हैं, या फिर इनसे मीट ले सकते हैं, या इनसे हमें जो भी अपना सामान होता है, पहले क्या करते थे बेटा, जो भी हमारे खच्चर होते थे उस पे अपना सामान रख के वो कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते थे, दैट वो जो पीरियड था उसको बोलते बेटा एनिमल डोमेस्टिकेशन, जहाँ पे बेसिकली डिपेंड होते थे ह्यूमन बीइंग एनिमल्स पे। नेक्स्ट है बेटा पीरियड ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर। उसके बाद जो पीरियड है बेटा ह्यूमन बीइंग किस पे डिपेंड होने लगे? एग्रीकल्चर पे। वो अपने जो भी उनके फील्ड्स हैं उसमें क्रॉप्स उगाते हैं और उन क्रॉप्स पे उनकी जो भी लाइफ है वो डिपेंड होती थी। और अब जो इन्होंने बताया पीरियड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसमें क्या हुआ है? द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस इन द लेट 19th century, द इमर्जेंस एंड द साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। मींस इसमें क्या हुआ बेटा? जो भी डिपेंड हो गया है ह्यूमन बीइंग साइंस और टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड हो गया है कि वो कैसे रिसोर्सेज का यूज करके अपनी लाइफ अर्न करने के लिए वो मनी को अर्न कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इन्होंने बताया बेटा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? जो भी हमारे चारों तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लाइक ग्रीनरी है या नॉन लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन लिविंग फिजिकल एलिमेंट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। जो भी हमारे चारों ओर की सराउंडिंग्स में है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ग्रीन एरियाज हैं, all are called the ecosystem, and ecosystem further divided into two categories, biotic and abiotic. Biotic, all of you know that living components like procedures are there, consumers are there, decomposers are there, these are called biotic. And abiotic further divided into three parts, inorganic, organic and climate factor. These are the components of ecosystem. Clear? Ecosystem having two categories, biotic and abiotic. Biotic also divided into three categories, processors, consumers, decomposers. Abiotic and non-living components again divided into three categories, that is inorganic, organic and climate. सारे बेटा theoretical units से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कि कुछ ना समझ में आए। फिर भी if you are having any doubt you can ask to me. Next is here types of ecosystem. Here they are saying that there are two types of ecosystem, natural ecosystem and artificial. Artificials made by the human being. Natural system further divided into two categories, that is
लैंड इकोसिस्टम जिसमें आपके बेटा ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट आते हैं, एंड नेचुरल सिस्टम आल्सो डिवाइडेड इनटू एक्वेटिक, दैट इज वाटर इकोसिस्टम. Water ecosystem further divided into two categories, that is stagnant water like lake है या pond है, या फिर lotic जिसमें आपके ये आ जाते हैं flowing water आता है, river है, stream है, ocean है. That is called ecosystem. Here types of ecosystem are two, natural और artificial. नेचुरल के फिर इन्होंने टू पार्ट बना दिए हैं, एक तो लैंड पे बेस्ड है और एक वाटर पे बेस्ड है. वाटर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, एक तो एक जगह इकट्ठा पानी जैसे पोन्ड है या लेक है, उसमें एक ही जगह पे स्टैग्नेंट वाटर होता है. लेकिन लॉटिक में क्या बनाया इन्होंने बेटा, फ्लोइंग वाटर, जहाँ पे रिवर है, स्ट्रीम है, वो मीन्स उनका पानी बहता जाता है, बहता जाता है. नेक्स्ट दे आर सेइंग दैट फैक्टर कॉजिंग इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट. वो कौन से फैक्टर है बेटा जो इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट में. फर्स्ट पॉइंट दे आर सेइंग दैट लैंड यूज चेंजेस, कि हम जो हमारी लैंड है उस पर इतना पेस्टिसाइड डालते हैं या फर्टिलाइजर्स डालते हैं या इरिगेशन फैसिलिटी करते हैं, दैट अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट. कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकेवेशंस, इसमें क्या होता है बेटा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम बन रहे हैं, रिजर्वेशन सॉरी रिजर्वाइजर और कैनाल्स बन रहे हैं, डाइवर्शंस बन रहे हैं, दे आल्सो कॉजिंग द इम्बैलेंस. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो ह्यूमन बीइंग है बेटा वो सारी ग्रास लैंड को खत्म करके उस पर केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स डाल के, पेस्टिसाइड्स डाल के उस लैंड को खराब कर रहे हैं. वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम, जैसे इन्होंने बताया वेदर को मॉडिफाई करते हैं. क्लाउड सीडिंग इंक्लूड्स participations, dispersals and cleaning clouds and fogs, checking the hailstorms. These also affect our environment. Nuclear program also imbalance our environment system. After that, here is the back exercise of this. I'll give you the soul self-assessment. Right now, we will not discuss it. Next point is here, natural resources conservation. Natural resources means क्या होता है बेटा? Resources that drawn from nature and used without much modification are called natural resources. Means बेटा जो भी हम resources अपने nature से लेते हैं और उन्हें हम बिना modification के use करते हैं, that is called natural resources. जैसे air है, वो जैसे हमें environment से मिल रही है, तो मुंह से ले रहे हैं. जैसे वाटर है, उसमें उन्होंने बताया लिटिल मॉडिफिकेशन वी कैन डू. जैसे वाटर है, उसके लिए हम प्योरीफायर्स लगा लेते हैं घर पे कि वो वाटर क्लीन हो जाए और हम पी सके उससे. सॉइल्स है, मिनरल्स है, these all are called natural resources. And natural resources further divided into two categories, renewable and नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल कौन से होते हैं बेटा? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज व्हिच गेट रिन्यूड एंड रीबैलेंस्ड क्विकली, जिन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल. फॉर एग्जांपल सॉरी renewable resources are those which get renewed or replenished quickly, that is called renewable. Just for example water and sunlight that are renewable. And non-renewable resources are those which have a limited stock. Limited stock means like बेटा हमारे जो हमारे एग्जॉस्शन की स्टेज पे गए हुए, लाइक coal, petroleum, other minerals, etc. are the examples of non-renewable. Now after that there are the practices of conservation of resourcing. हम कैसे इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. इन्होंने बताया अगर सॉइल को कंजर्व करना है तो क्या करना चाहिए, हमें ड्रेसिंग करनी चाहिए, कंट्रोलिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अलग अलग टाइप की खेती करनी चाहिए, प्लगिंग एंड गगीज, क्रॉप रोटेशंस, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ रेन वाटर एंड ड्रेन्स. इन सारों में से बेटा ऐसा नहीं आपको सारे पॉइंट लर्न करने, हार्डली 2 to 3 पॉइंट्स आप कोई भी लर्न करना जो भी से लगता है, जैसे लाइक controlling and shifting of cultivations, crop rotations, controlling flow of rainwater and drain and rivers, and after that afforestation, plantations of busy plants and trees in the desert area. Means how we can conserve our soil. Then you can write any 2 or 3 points among all these, that no need to write all these points because complete unit बेटा इतनी बड़ी आपके सिलेबस में सिर्फ 2 मार्क्स की आएगी इस यूनिट में से जो भी पेपर में आएगा. नेक्स्ट बेटा वाटर. वाटर को हम कैसे करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन करके, मल्चिंग करके, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर,
जो भी आपको इसमें से पॉइंट इजी लगते हैं, लाइक रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर इज देयर, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर, and next is rainwater harvesting. By these methods we can conserve our water. And how we can conserve our air? Use the CNG in the motor vehicle instead of diesel and petrol. Carpooling is there, public awareness is there, increasing the height of chimneys. These points you can learn from here. And how we can conserve our forest and wildlife. They are saying that prevention of forest fire, आग से बचाना चाहिए हमें forest को, establishment of national park, wildlife sanctuaries and zoological gardens, stopping poaching and smuggling, stringent legislations. By these methods, we can conserve our forest and wildlife. And after that, they are saying हम अपने minerals को कैसे conserve कर सकते हैं, reuse and recycle करके, modern और efficient technologies का use करके, changing energy waste and lifestyles का use करके, use CNG use करके vehicle में, LPG करो rural areas में use. These are the points by which we can conserve our environment. You can learn any 2 or 3 points among all these. After that, here is the back exercise that I'll give you the assignment. Next point is here, environment protections and conservations. Means how we can protect our environment and how we can conserve our environment. First, they are saying that the same thing is here, control and prevention of soil. Means how we can conserve and prevent the soil pollutions. कैसे हम अपनी soil को pollute होने से बचा सकते हैं. First point, they are saying that industry should be made to install collectors and remove particular waste. Industries को क्या करना चाहिए, जो भी उनका wastage है उसको पहले ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें वेस्ट को कहाँ पे फ्लश करना है. ऐसा नहीं है कि सारे वेस्ट को रिवर में डाल दो, सारा रिवर का वाटर पॉल्यूट कर दे. प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए. से नो टू द प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं यूज करनी चाहिए. सेपरेशन ऑफ डोमेस्टिक गार्बेज एंड प्रॉपर डिस्पोजल. जो भी हमारा डोमेस्टिक घर का कूड़ा कचरा होता है बेटा, उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड इंडस्ट्रीज वेस्ट. ऐसा नहीं कि कहीं पे जो भी मन करे वहीं पे वो चीज फेंक दो, नहीं. इन हर एक जो भी हमारा वेस्ट होता है उसकी हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी चाहिए कि ये वाली चीजें हमें कैसे फेंकनी है. नेवर लिटर, स्टॉप यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करना चाहिए. कंपोस्ट योर ऑर्गेनिक वेस्ट. जिससे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है बेटा, जैसे जो भी हमारे हम वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, वो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसे हमें कंपोस्ट करना चाहिए. कि या तो ना उसे एक जगह ऐसे गड्ढे से मैं थोड़ा सा उससे दबा दूं, उससे क्या हो जाएगा बेटा, वहाँ की जो भी लैंड है वो ऑटोमेटिक, उसे किसी भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिक वहाँ पे अच्छी हमारे जो भी हम एग्रीकल्चर करें या कुछ भी हम वहाँ पे उगाते हैं तो वो एक अच्छा यूज होता है. उन्होंने फिर उसके बाद बताया हमें 3 साइकिल्स का यूज करना चाहिए, रिफ्यूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल्स. हमें हर टाइप का जो भी वेस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहिए, रियूज और रिसाइकिल करना चाहिए. आफ्टर दैट कि वाटर पॉल्यूशन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. दे आर सेइंग दैट ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लिक्विड वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इन ड्रेन, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग, प्रॉपर ड्रेनेज होनी चाहिए, प्रॉपर सेप्टिक टैंक यूज करना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ अब्यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंट्रोल करना चाहिए, ऑयल स्पिल्स इन सीज में. और एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल हो सकता है, एफोरेस्टेशन करो. डिफोरेस्टेशन मींस तो होता है बेटा ट्रीज को कट करना, लेकिन एफोरेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारे ट्रीज को लगाना. स्टॉपिंग फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट को आग से बचाना चाहिए. कर्बिंग एमिशंस फ्रॉम मोटर व्हीकल, जो भी हमारा मोटर व्हीकल से धुआं निकलता है उसके लिए हमें कर्ब एमिशंस यूज करना चाहिए. यूजिंग कंप्रेस्ड सीएनजी यूज करनी चाहिए व्हीकल्स में, बजाय कि हमें डीजल या पेट्रोल से जो भी हम व्हीकल्स रन करते हैं. कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ CO एंड NO2. CO2 आना चाहिए बेटा यहाँ पे, CO2 एंड NO2 हाइड्रोकार्बन्स एंड इम्प्रूविंग इंजन डिजाइन. फिल्टर्स यूज करने चाहिए. यूज द क्लोन कलेक्टर्स एंड इलेक्ट्रोप्लास्टिक precipitators, इंस्टॉलिंग द एयर प्योरीफायर्स. मींस बेटा जो कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपने सबने पढ़े हुए हैं, कोई भी आप पॉइंट्स इसमें से लर्न कर सकते हो. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, ग्रीन इकोनॉमी.